it is also motivation to the job. So, he's doing now. क्या? We'll do this. We not dead. कोई तो आके ज्वाइन करे यार. आज से भी होना कोई भी चलेगी. ये ऐसे ये कैसे करेंगे? अरे इतना इजी नीचे और इतना इसको ऐसे करो. इधर कर ना फोटो दे ना मुझे. चूतिया मारने. मैं करोड़ा हुआ है. ये सब रिकॉर्ड है. ये फिल्टर्स भी आ गए मेरे. Why is this not allowed? अरे मैं अलाउ नहीं किया. अलाउ करना. अरे करने तो दे. करने तो दे. बोर हो रहा है fucking. Fill my hands, fill my hands, tell me how this goes. Bro, why not? पर तेरे कौन से रखते हैं? इतना चार्जिंग तो है ना? नहीं, स्विच ऑफ. नहीं आ रहा. माइक्रोफोन भी अलाउ करना पड़ेगा. लोकेशन भी अलाउ करना पड़ेगा. तू इतना डम. Sexy boys, not at all. Ugly bitch. कैसा है? क्या हुआ? फोटो लेने का फोन किया. What are you ugly bitch? You ain't funny, bro. Like, yeah, नहीं yes. तो proper नहीं कर रहा. अरे नहीं अच्छे से नहीं आ रहा. Let's go. Let's go. This year पर गाना ये सॉन्ग. Let's go. गाना कौन सा? तू बता. let's go. Apocalypse. नहीं ये गाना. Say for the moon. नहीं तो What is it? कौन है? मेरा एंट्री इतना डाशू. What was that music? M&M. Oh really? What is that? New number out? No, so it's from 90s. अच्छा. नहीं मुझे वैसे भी इंग्लिश गाने समझ में नहीं आता तो मैं सुनता भी नहीं. अभी मैंने सुना J-pop से पब्लिक K-pop में जम मारा है. Who's that fellow who was singing? I have seen one that. तो वो लड़का है क्या लड़की मुझे वही शक्ल से ऐसा कॉमेडी दिखता है. Korean हाँ. I have seen many people when they were I was working in Singapore ना. Many Koreans and Japanese बड़ा shows करते हैं. That also free of charge. किया है? K-pop भी किया है. चलो, let us write some few lines about this chapter. It's a quite an interesting chapter. We have to finish not today by anyhow. So write down first the meaning of the word senses. And of
official census, enumeration of ऑफिशियल सेंसस हाँ नहीं रे सेंसस के आगे ऑफिशियल लिखना क्या मतलब an official enumeration हाँ of total people enumeration living within the country what did I say? Within the country with मत करो full stop within the country. In India, next line. In India, official census is taken after every 10 years. And all relevant details of the population are taken into account. All relevant, RELEVANT, are taken into account. so this year India's population They are going to take electronically. Close to रहेगा अभी पता नहीं कितना है. And definitely at least चाइना को हम बोलेगा हम एक लेवल में तेरे से ज्यादा है. चाइना पूछेगा what population. sir yes like India has the highest population now it's second right so highest to bad thing is good thing bad It's a good thing if you are able to manage all the population minimum facilities at least. Bad thing when we are able to not give all the people the food or other things, then it is bad. but it's a land of proportion That is. But what is good thing about India now? We are having this vertical settlement. Before this Palm Beach developed, this area where we are standing today, I was living just across. This was only marshy land. पूरा कीचड़ से भरा था. अभी कैनवे से कीचड़ से भरा हुआ है. We have buildings which are 40 or more than that. We count our own Morad society. I heard it is close to 900 families. You count even one person coming from one family at a time. It's a big mela. I remember when I purchased a flat beginning, roads तो almost नहीं था, electricity भी failure. मैं थोड़ा आगे रहता, वो temple के उधर. Then electricity failure was a common thing. The construction चालू हर जगह तो रहेगा. So every time I used to come down to that Moraj, जो अभी बैठने के लिए जगह वो सब नहीं था. Moraj का gate था जरा बड़ा था. So I remember Moraj used to look like a more mela like thing. So मेरे एक दो friends थे, now they have gone abroad. They said कि close to 898 flats are there. You count even one person coming down when there is current failure, electric failure. क्या हो जाएगा? So now you are saying that land problem, na, at least cities are solving it with vertical. But how many? You go to Bangalore even today, vertical settlement is less. Horizontal settlement is more. But Mumbai का population, sorry to say, मेरे ख्याल से कोई भी city में नहीं है. दिल्ली में रहेगा because Delhi is very small and Noida, UP, Punjab, Bihar, सब public उधर आता है treatment के लिए. Maybe I haven't gone to Delhi any time. But Mumbai is able to manage, but we do not know up till how. Navi Mumbai is considered to be the second most planned city in India, second most. And all over India, it comes 1 to 5 for neatness. A time the Mysore was rewarded as the most clean city. Even Navi Mumbai is putting its pressure.
You take your own vehicle with your father or mother, go to Bombay. What is the scene? Sir, driving, big trouble. Parking, the biggest trouble. At least you come to Navi Mumbai, parking is not a big issue. It's an issue, I'm saying. But it's not that issue what we are seeing it in Mumbai. So that's direct proportion to the population. If I tell you, you will be shocked. They say daily 5,000 to 15,000 people come to Bombay. Where they go? That's why it is called as Mayapur. Matlab, city of dreams. Amitabh Bachchan has wrote many times, if I don't come to Mumbai and got some chances in films, I would be a Doodh wala bhaiya. But his dad was a big writer, you know. अमिताभ बच्चन का डैड का नाम सुना कि नहीं? हरिवंश राय बच्चन. उसका पोएम्स भी था, हम लोग हिंदी में पढ़ा. He was a great writer. So we keep talking, population create acute shortages. But there are countries which need a population. Because that country does have very limited population. But India में तो मुझे तो लगता नहीं आज तक हम लोग कभी बोला भी नहीं shortage of population. We are surplus, abundant. अभी 2024 I think 23-24 में census होने वाला है. Let's see, as you guys are saying, census होगा. And Amit Shah, I think I remembered one he was saying कि electronic होगा. मतलब एक ऐप रहेगा जिसके थ्रू आप अपना फैमिली डिटेल्स भर के भेज देंगे. Very electronic सभी नहीं भेजेंगे. अभी देखो गवर्नमेंट ने बोला है, वी डू नॉट नो. जब ये वो कौन सा ऐप था, वो कोविड ऐप ना, कोविन. मेनी पीपल से नहीं हमारे पास ये नहीं हो. सब लोग ने किया ना, कोविन के थ्रू ही बुक हुआ, कोविन के थ्रू ही आपका वैक्सीन हुआ. वैसे ही कुछ सिमिलर आप लेकर आएगा ऐसा बोला है, वी डू नॉट नो. बट अगर ऐसा हो जाएगा ना, द डेटा विल बी वेरी क्विक एंड द कलेक्शन कैन आल्सो बी वेरी करेक्ट. अभी आप अपना फैमिली डिटेल्स बराबर भर सकते हैं है ना. बट 1% कम है. आपके घर में कितना लोग हैं? हाँ क्या, हाँ कब मरा? That is what is trouble. उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया रहेगा ना. Like you are saying, there are thousands of people who might not have this. अभी sorry to say इंडिया में मुझे तो नहीं लगता कि कोई पर्सन के पास 4G वाला मोबाइल नहीं है. अपना गरीब भी शायद अपना काम होने के बाद निकल के बोले हाँ मेरा काम हो गया, मैं आ रहा हूँ टैक्सी बुक. सबके पास तो फोन है ना. बट एज यू से दे मे नॉट बी एबल टू यूज इट. आपको कैसा डाउनलोड करने का वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेंगे. जैसे अभी ट्रैवल थ्रू कार नाउ यू हैव अ फास्टैग. ये सिंगापुर में था, डे 1 से है. हाँ, एक छोटा सा बॉक्स जैसा रहेगा, आप अपना क्रेडिट कार्ड भी उसमें डाल सकते हैं. डाल दिया ना, वो टिक टिक करेगा, मतलब दैट मनी इज डिटेक्टेड एवरीवेयर, पार्किंग से लेकर हर जगह. अब इंडिया में फास्टैग अभी आया. इनिशियली सो मेनी पीपल, ये क्या है फास्टैग? अभी हर जगह हाईवे में टोल फास्टैग के थ्रू ही जाता है ना. as soon as your car enters there is one sensor. जैसे आपका नंबर डैश करेगा तुरंत आपका पेमेंट कट. एंड यू आर. इंडिया की फास्टैग थोड़ा सा गंदा है मुझे मालूम, थोड़ा क्या बहुत ही गंदा है. सिंगापुर एंड मलेशिया, सिंगापुर इज एब्सोल्युटली गुड. एंड इफ यू डू नॉट हैव देन यू आर फाइन. चलो वो सिंगापुर इज अ कंट्री व्हिच शायद ही कोई कंट्री बनेगा. वो इतना सा तो है कंट्री, but they are very full proof. चलो let's go to the second. What I was giving, population area na, then you write distribution. Population distribution in India is highly unequal. Especially with large cases of migration. Bracket on alpha, which to which migration we are? Very good. Go down to.
there has been a growing trend of unequal distribution. One more sentence. इसमें थोड़ा सा रीडिंग भी करेंगे, मजा आएगा. In India, unequal distribution. In India, the migration of people is mainly due to. Can you say some reasons? So jobs. Very good. And Medical health facilities. पहले लिख लो jobs, medical health facilities. Then you write education, better standard of living, etc. Okay. You pick up your pencil, be ready. I'm just reading certain points so that you can mark and keep moving. So we are going to read from the word census only. Okay. Census is an official enumeration. Hey, what is that word enumeration? count. Very good. Write that word counting there only. In India, the first census underlined 1872. Hey, did we get independence? No, sir. Then how come? British people. The complete census was in the year underlined. Complete census 1881. And every 10th year underlined. 1872 was the first time. And complete one was 1881. And underline most comprehensive source of demographic. उधर मैंने demography लिखा है ना, ऊपर लिखो demography, उधर लिख लो study of population. Demography के ऊपर लिखो study of population. Social and economic. This not only helps in total number but also open bracket. Latest distribution of population, sex ratio, age composition. What is occupational structure? So the job structure, like how many people are in the labor section. Oh my god, ये कौन सा नया है? You tertiary sector. Very good, very good. Correct. What is it? We say generally the total population, more population is in primary sector. Correct? Then comes secondary, then comes tertiary. If I say this is the picture, in between the lecture, why you need it? Sir, actually call it. You can call it from the office. Sorry, sir. So when I'm saying the word primary, if more population lies in primary, I say this is a developing country. Do you accept? Yes. If more population is in tertiary, this is a developed country. So based on this, we always understand occupational structure gives me a direct signal whether that country is developed, developing or underdeveloped. जैसे अफ्रीका जैसा country agriculture में भी बहुत weak है. I was teaching that other class, they were saying, sir, Somalia था. So Somalia people do not get even rice and wheat to eat. They get something called barley. सुना है barley? Very poor. Children's maternal mortality, infant mortality is very high. And अगर आप वो pictures सब देखेगा बोलेगा नहीं सर ये मैं देख भी नहीं सकता. But people are living there. क्या करें? I don't know if you remember that Hollywood actress called Angelina Jolie. She had done tremendous work in Somalia. एक टाइम पर वो अपने आप को presidential candidate खुद ही डिक्लेयर कर लिया. तो गरीब के लिए बहुत काम कर रही थी. पता नहीं अभी किधर गई. Even I like her as an actress, but she had done tremendous work in Somalia and some other African. वैसे American actors लोग जाते हैं उधर पैसा देते हैं. Even Michael Jackson has done when he was alive. Donations. इनफैक्ट बहुत जगह पर वो जो भी शोज का पैसा लेता था ना वो पूरा पैसा सोमालिया भेज देता था. बट
that country is totally poor. So now, which is the poorest country? there is one island called Haiti. Haiti. Correct. वो भी है. फिर एक पापा न्यू गिनिया, उसका भी मैंने सुना है. पाकिस्तान से भी उनका बेटर है कंडीशन. अभी पाकिस्तान उतना, तो बहुत जल्दी पाकिस्तान भी पोरस कंट्री में गिना जाएगा. वैसे तो है ही. पाकिस्तान बहुत हवा उड़ाता मैं वो, बिकॉज इट इज अ न्यूक्लियर, तो थोड़ा बहुत है. बट पुअर पीपल आर वेरी. उसका न्यूक्लियर नहीं होना, चाइना इज प्रोवाइडिंग, राइट? बट है ना, उसके पास है ना भी. अभी जैसे ये किमोंग जोंग है, वो जितना भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है, देयर पीपल आर वेरी पुअर. बट किमोंग जोंग के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? मैंने सुना नहीं है, दैट्स मेनी पीपल नो, व्हाटएवर चाइना वांट्स टू डू द न्यूक्लियर टेस्ट, चाइना विल नॉट टेस्ट. चाइना विल टेस्ट इट थ्रू किमोंग जोंग, क्योंकि वैसे भी वो बदनामी है. वैसे भी उस कंट्री का अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? किमोंग इज फ्रॉम कोरिया, राइट? हाँ, कोरिया, साउथ कोरिया ना. हाँ, तो सारा जो टेस्ट उसका होता है, आई थिंक मोर और लेस फाइनेंस्ड बाय चाइना ओनली. साउथ कोरिया नो, ही इज आई थिंक नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, आई डोंट नो व्हाट आई गेट कंफ्यूज्ड. So why I'm saying this, because occupational structure means out of the total 100% population, how much percentage is primary working, how much percentage in secondary, how much percentage is working in tertiary. Okay, so let's move ahead. Okay, so write that in your notebook. Occupational structure. It gives occupational structure a clear picture of distribution of population into primary, distribution of population into the primary, secondary and tertiary sector. It gives a clear indication of the level of development of any economy. Okay, now let's come into our volume. Come down to page number 2. Most developed country must be United States. Not necessarily. In fact, India has got the WHO certificate of 99.9% polio free, 100%. But America is only 64% polio free. अभी एक प्रोविंस है उधर 27% का पीपल के ज्यादा पोलियो अफेक्टेड बच्चे लोग अभी भी है अमेरिका में. मैं पहले बार जाके उधर उतरा फ्लोरिडा, तो ऐसा गटर की तरफ बारिश में गटर था, उससे तो धारा भी अच्छा था. हाँ, अमेरिका में ऐसा बहुत गंदा जगह है, वो बस उन लोग दिखाते हैं तो कुछ नहीं है. यू नॉट सीन दैट मूवी कॉल्ड स्लमडॉग मिलियनेयर? हाँ, तो अमिताभ बच्चन ने बोला कि मैं उस मूवी में इसलिए काम नहीं करूंगा बिकॉज इट इज शोइंग बैड थिंग अबाउट इंडिया. अनिल कपूर ने काम किया, बट इट्स अ ऑस्कर अवार्ड मूवी ना. वो एक अमेरिकन प्रोड्यूसर ने इंडिया के ऊपर मूवी बना. इंडिया का प्रोड्यूसर जाकर अमेरिका में ऐसा गंदा जगह पर मूवी बनाने देगा क्या अमेरिका? नहीं देगा. Forget about night time. In daytime only you will be looted in America certain streets. हाँ, फिर क्या? उसे तो इंडिया बॉम्बे बेटर है ना. दिन में तेरा ऊपर से कोई बदन they will loot everything except the minimum clothes. That's why in America you are allowed to keep a gun because police cannot give you protection. Big country, but gun culture कुछ अलग ही यूज हो रहा है ना. So अभी जितना भी कंट्री का रेटिंग्स आता है, many citizens of the world, not India, they say the best country to live happily and peacefully is India. And I don't know whether you know the news or not. Maybe next 3 weeks or 4 weeks, the first time in the world history, India currency can defeat American dollar. Can.
we are neck to neck going. ये सब बहुत सारा न्यूज़ चलता है. अमेरिकन डॉलर तो might come down below Indian currency. मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाएगा, but at least कुछ टाइम के लिए तो किया है. So this is what India. And India एक टाइम था कि we were importing only weapons ना. अब India has become the largest exporter of weapons. American government हमसे weapons खरीदने के बारे में सोच रहा है. BrahMos missile, America is interested in buying it from India. अभी ये तेजस करके एक एरोप्लेन इंडिया ने 100% बनाया तेजस. उसमें 2 सीरीज है, मार्क 1 एंड मार्क 2. अभी मार्क 2 के लिए ऑलरेडी फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया ने बड़ा ऑर्डर दिया है. अभी इंडिया के पास इतना पैसा आ रहा है, सोचो 4000-5000 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट बना रहा है इंडिया. वेपन्स बेच रहे हैं. कभी सोच के भी नहीं देखा रहेगा कि इंडिया वेपन्स बेचेगा. हम खरीदता है, दैट इज ओके. रशिया से खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है. अभी अमेरिका इटसेल्फ वांट्स टू बाय अ ब्रह्मोस मिसाइल. जैसे आप लोगों ने बोला ना, चाइना का जितना भी टूटा फूटा भंगार एरोप्लेन है वो पाकिस्तान चलाता है और वो अपने आप को दिखाता है मैं इंडिया से बेटर है. कब वो एरोप्लेन का क्या होगा तुझे खुद मालूम नहीं. एक JF2 आई थिंक JF2 एरोप्लेन, तो इंडिया ने जब रफाइल मंगाया फ्रांस से, तो चाइना पाकिस्तान वो सही हमारे पास JF2 है, बट JF2 का जो फीचर है रफाइल के सामने कुछ भी नहीं है. So there are many technicalities. मैं बात करते रहूँगा. चलो, let us not come down to page number 252. India's population size and distribution by numbers. थोड़ा data याद रखने का. I'll make you to remember very simple. Underline that. March 2001. ये bracket में डाल दो. 1210. आप ऐसे एग्जाम में याद रखना. Sorry, 11. 1210 population million. And underline 17.5% of which population? Very good. That you have to remember. Be there. Underline 1.21 billion. Careful, huh? Earlier it was million. How many million makes 1 billion? 100. 1000 million is 1000 billion. Sorry, 1000 million is 1 billion. So क्यों billion में टेंशन आ रहा है? Billion is bigger than million. Yes. So this is 121,000 million. Am I correct? Yes. Then it is 1.21 billion. Yes. Distributed our country. Underline that. पहला 17.5. Now we are 3.28 square kilometer. अच्छा. ये सब नहीं लिखा तो भी ये लिखना पड़ेगा. 2.4% of the world area. इंडिया के पास geographical area है. Circle that 2.4%. That is which area? इंडिया के पास कितना एरिया है? UP underline thickly populated. Don't remember that 199. Most populous लिखा है ना? Populous को भी कट कर लो, ऊपर लिखो thickly populated. बस. And then come down directly. Sikkim lowest population. हाँ, इंडिया का स्टेट है. लक्षद्वीप is an UT. Underline Sikkim 0.6 million. लक्षद्वीप is UT. उधर देखो. अरे बाप रे, ये तो हमारा एरिया का ही पॉपुलेशन रहेगा. एरिया भी इससे भी ज्यादा है. अपना पाम बीच में नहीं, अपना पाम बीच का पॉपुलेशन भी 64,000 से तो ज्यादा ही रहेगा मेरे ख्याल से, है ना. क्लोज टू 1 लाख तो रहेगा इजीली. पहला एक टाइम था बहुत कम था. अभी तो हर बिल्डिंग में हर जगह है. तो मतलब पूरा लक्षद्वीप का पॉपुलेशन, जैसा ये बोलता है कि नवी मुंबई का एक छोटा पार्ट का पॉपुलेशन भी नहीं. It's close to 65,000 only. Let us go down to India's population, 5 states. Underline. India ka total population 5 states. This they will ask you in the exam. Open bracket UP, Maharashtra, Bihar, West Bengal and AP. Then Rajasthan, underline. Area wise biggest. 5.5% total population. Hey, if I ask you, Rajasthan is this desert and how come this 5.5% of India's population live in Rajasthan? Any idea? Abhi Rajasthan entire is not desert. Only western part of Rajasthan is desert. Arid. Jaisalmer suna hai? And that is desert. Whereas the other part of Rajasthan is lush green field. But हमको हमारे बच्चा राजस्थान बोलते हैं सर, पूरा राजस्थान नहीं है desert. Only 1/3 भी नहीं है. मैंने सुना 1/3 से भी कम है. So Rajasthan is a thickly populated 5.5%. हाँ, स्टेट छोटा है but population का density ज्यादा है ना. Equal to Maharashtra. हाँ, close to that. Let us go to next. India population distribution by density.
उसके पहले आप लोग लिख लो पॉपुलेशन डेंसिटी. आई एम गिविंग दैट टेक्निकल टर्म्स. Average number of people living in per square kilometer area. Per square kilometer area. पर में लिखने का तो you can write 1 square kilometer area. Highest density is West Bengal. ये पुराना फिगर भी रह सकता है, आप लोग अगर टेक्स्ट बुक में मिला तो वो लिख देना. अच्छा इधर है हाईएस्ट डेंसिटी, अभी नॉट वेस्ट बंगाल है, यू राइट सॉरी बिहार लिख देना. हाईएस्ट डेंसिटी इज बिहार, ब्रैकेट यू राइट 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. केयरफुल आप, पर्सन एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रहता है, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. And the lowest density is Arunachal Pradesh. Did you get it? 17 persons per square kilometer. You have to write like this: persons per square kilometer. दिया. Arunachal Pradesh is 17. Whereas Bihar is 1106. Am I correct? I make the figures remember like this. This is 17. This is Bihar. Highest density. Okay. So I'm reading again density. You can listen. Then we'll go ahead. Population density provides a better picture of uneven. Underline that word, uneven distribution. It is calculated as the underline number of persons per unit area. ये मैंने दिया है. Next, India is one of the underline most densely populated country. Underline Bangladesh and Japan have a higher average. अभी Bangladesh and Japan are having higher average than India, but I don't accept this because India is by far bigger than Bangladesh, and India is by far bigger than even Japan. तो मुझे लगता है कि फिर भी इंडिया इन दोनों से बहुत आगे है. किसमें? डेंसिटी. Let us go to this one. I have already done. Rugged terrain and unfavorable climatic condition are primarily responsible. Put into bracket rugged terrain and unfavorable. What is this rugged terrain according to you? Some people say sir don't say rugged, it is rugged. ठीक है, जो भी है. rugged मतलब उधर लिख लेना hard, stony, undulating surfaces. Hard, stony, undulating surfaces. So the mountain area भी लिख लो. That is also done. Mountain surfaces. Next. Assam and most peninsular states have moderate population. Hilly and dissected have moderate to low. Shallow, less. वो सब चाहिए भी नहीं. Let's go to the next. Northern plains and Kerala. This they will ask you. Underline. High to very high population. Now, if I ask you first northern plains, उसके ऊपर लिख लो alluvial soil. Northern plains के ऊपर you write down alluvial soil. That first line in page number 254. What is alluvial soil supporting? Wonderful. Agriculture. Cotton खाएगा तो. Alluvial soil के बाद में लिखो agriculture. And how about Kerala? उधर ही दिया है उन लोग ने rainfall. So I think south में अगर कोई state है which is very lush green, very fertile, I can't say even Karnataka. It's always Kerala. Kerala, you know, first rainfall Kerala में मिलता है, and one of the rainiest part India में Kerala भी है. हाँ उधर ही होता है. So North Indian plains and Kerala has the moderate to high density. समझ में आ रहा है why? So wherever agriculture is good, automatically population density is high. So now read through all and tell me you have any query. I'll give you 2-3 minutes of relaxation. Both are yawning, groaning. I don't know what has happened.
मैं इतना एनर्जी के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, रिलैक्स हो, फाइन, नो प्रॉब्लम. I'll also come in 2 minutes from the washroom facility. ऐसे नहीं रहती, ऐसे नहीं. कम तो ये हो रहा है, हो रहा है. ठीक है. एल्बोनी पूरा इधर तक हेड आना चाहिए गाइस. एल्बो अच्छा ना. हां, एल्बोनी कैसी पूरा हेड इधर आना चाहिए. ऐसे आना चाहिए. तू नहीं कर कैसे हुआ तो वीडियो करता है सेव करना यार. मोटिवेशन आ जाएगी अच्छे यार. अरे मोटिवेशन देखिए इसको डिलीट कर दो. इसको लिखो क्लोज फ्रेंड्स में डाल. तूने कमेंट ऐसे ऊपर डाला नहीं डाला. मॉकिंग बर्ड स्लो भी रहा ना. अपोकलिप्स है. स्पीड है. चलिए I voted for someone. Instead of writing it. These photos will be not there. This is good. कौन नहीं ले रही इसमें लेती है. लड़कियां 2 ही लड़कियां हैं. लड़कियां कौन नहीं वहां भी है. अजीब है तो यार. क्या वो आया किसी पूरी ग्रुप को भेज देगी. अलग से क्या लग सकता है. But now she has something. Music happening सिखा रहा हूँ. ठीक है. Wait for dancer. जैसे यूज़ में उसको निकाल. वो एक यूज़ से कर रहा है क्या? यूज़. यार. उसे भी बोला है. सर ये गाना खाली सीन में छोड़ रहा है. कल मेरा खाता नहीं है ना सर. हेलो. चलिए. Yes. What we were doing? Sir, population. Okay. Just 1 minute. Okay, till the time it comes. At least you are understanding. देखो, when we are discussing this density of population, always try to understand the highest density and the lowest density. अभी density मतलब if I say 1 square kilometer, in that 1 square kilometer how many people are there? अभी जैसे if I say Bihar, in 1 square kilometer close to 1,000 people are living.
Just give me 1 minute. हाँ बोलिए इधर रूम में बैठो कल मेरा खालर का लेक्चर है ना कुछ अच्छा तो मुझे खबर देना चाहता है मैं देख ठीक थैंक यू ओके so what are we up to now so this density will give you a clear picture how the population is distributed Abhi we say Arunachal Pradesh is the lowest density, it directly shows no opportunity. Agriculture is less, industry is zero. Automatically people try to move out of that area. If you have at least seen the place called Philippines, and some people say Philippines, it's very naturally gifted country according to me. क्योंकि जितना लोग से भी मैंने मिला, they are absolutely saying कि हमारे कंट्री में ये मिलता वो मिलता फिर क्यों उधर रहता नहीं है बोलते जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है नेचुरल डिजास्टर सबसे ज्यादा हाँ एंड मनीला एंड अदर प्लेस दे गो इट्स ऑल पिकनिक स्पॉट एंड सिंगापुर में हम लोग को जब $4,000-5,000 इज अ बिग स्मॉल अमाउंट फॉर देम यू गिव $1,000 दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट मैंने पूछा ऐसे कैसे साला हमको $5,000 कम पड़ता है तो $1,000 में बहुत राजे सर दिस $1,000 Singaporean dollar in my country is close to 1 crore rupees उसको $800 भी देगा ना बोलते सर आई एम अ रिच मैन इन माय सिटी इंडिया का भी करेंसी अगर आप इंडिया का मेरे ख्याल से 7,900 कुछ रुपए ना 10,000 लेके जाएगा इंडोनेशिया एंड सम अदर कंट्री इट इज क्लोज टू 10 lakhs of rupees sir 1 Indian rupees equal to 290 हाँ आप जाके उधर रहेगा आप भी 5-star होटल में रह सकते इंडिया का 10-20 हजार रुपए लेके जाओ बट फायदा क्या है ना फायदा क्या है so we always believe this density gives you a picture in which we are going to explain how the population is distributed अभी take case of this Palm Beach itself many people said क्या Palm Beach कुछ नहीं यहाँ पे Palm Beach पूरा आधा पॉपुलेशन तो इधर ही है it starts from Vashi this Sanpada it goes up till that Seawoods Belapur is it not Belapur Seawoods तक हाँ Belapur तक so it has put the chunk of the population मुझे तो लगता है जो खारगर अकेला एरिया है या हमारा एरिया उसका 10 गुना बड़ा रहेगा why because the population has come into this area अभी ये तो फिर भी ठीक है now just wait for 2 more years अभी ऑलरेडी मैंने सुना है बहुत बढ़ रहा है पब्लिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं बोला रही इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेरा घर से क्या संबंध है तू क्या डायरेक्टली जंप मार के फ्लाइट में बैठ वो मालूम नहीं मेरा घर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नजदीक बोला अभी होने दे एक बार फ्लाइट स्टार्ट हाँ फ्लाइट स्टार्ट होने दे देन यू विल गेट द ट्रबल बोला क्या ट्रबल बोला तेरा पहले तो नॉइज पोल्यूशन जितना भी तेरा टेलीकॉम नेटवर्क है सब कट होने वाला है and imagine half of the flights from Mumbai International Airport will be diverted to Navi Mumbai and flights doesn't give a very squeaking sound है ना then you will see what is the trouble तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक ठीक है ओके so we always believe that population distribution is nothing if you get good opportunity in one area people come to clog around and other जगह पर अरुणाचल प्रदेश में people देखो कितना people रहता है 17 उतना ही एरिया में बिहार में how many people are living 1000 imagine what might happen so sorry if you are from Bihar here also I have seen some Bihari people एक छोटा सा रूम में 15 जन रहता है मुझे इधर आ जरा ये कैसे रहता है वो भी फैमिली के साथ सर यही कहाँ सर आप हमारे बिहार में आइए हम ऐसे ही रहते हैं उधर भी उसको आदत से हो गया हमारे घर में हम एक ही है बड़ा फ्लैट रहने के बाद क्या जगह यार हमको और एक बड़ा रूम लेने का बिकॉज वी आर हैबिचुएटेड लाइक दैट फिर भी व्हेन आई थिंक यूएन रिपोर्ट पब्लिश्ड द मोस्ट हैप्पीएस्ट सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड सम टोल्ड अमेरिकंस नो पेरिस फ्रांस नो लंदन इंग्लैंड नो बांग्लादेश वाज नंबर 1 पीपल बोले हैं Bangladesh people are the happiest citizens because they are very happy to live in whatever they are having. So I thought Bhutan was the happiest. Bhutan is a very small country as compared to Bangladesh. It's a hilly region.
इनफैक्ट they say Himalayan kingdom is Bhutan. आधे से ज्यादा हिमालय का ब्यूटी भूटान में दिख जाता है. If I tell Bangladesh why अभी आज का मैच, I think India has defeated them. I don't know why. I don't watch the match. You see, Bangladesh is playing. You look at their citizens, how they watch, as if they are watching their country, as if they are the Australia. देखा कितना एकदम हु एकदम उधर खाने के लिए रोटी नहीं है घर पे, but they are happy. What about you and me? एक कार आ गया, दूसरा कार लेने का, इधर एक फ्लैट है, उधर एक फ्लैट लेने का, टेंशन में ही रहते. So we always believe population, spatial distribution is always equal or unequal. Unequal. And India में सबसे ज़्यादा है. You go to any European country, then also there and there. But here, India, as you are saying, number of people are becoming double, triple, I don't know how many times, but the geographical area is the same. In fact, एक बार अमेरिका गवर्नमेंट ने बोला अगर एशिया में ऐसे पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, with special reference to India, Earth will subside. You understand subside? Earth cannot take the weight of the people. That can happen. अभी नासा है कुछ भी बड़ा बड़ा फेंकेगा, मे भी रहेगा, we do not know. And it's right only ना, because we are not living alone on the earth. इतना बड़ा buildings बना रहा है, इतना बड़ा roads बना, सब तो कर ही रहा है ना. As the population is growing, the settlement is also growing. Why not happen? When we are digging deep into the ground, it is giving which waves? Earthquakes. Correct है कि नहीं? We are exposing the ground. So there are many other troubles. So हमको लगता है कि क्या है सर population? But this population, I feel in geography is most interesting. Why? Sir, इसमें technicalities कुछ नहीं. Okay. So let's move ahead. 720 or 725 ना? 25. I remember. Let's go down. India's population density हो गया ना? Let's go to page number 254, population growth. I'm reading that also. Population underline dynamic phenomena. Why is the word dynamic? What's the meaning of the word dynamic? Now उधर लिखो ever changing. हाँ, अब इंडिया में if I tell you you laugh, but अब इंडिया में अभी पहले से better है. India में population birth rate, not birth rate, population birth was like this: 1, 2, 3. One Indian is born. 3 seconds, one child. And दुनिया का fastest India ही था. अभी now they say in every 1 minute there is 30 child is born. फिर भी better है. America 17 minutes one child. सिंगापुर they say 25 minutes not even one child, क्योंकि उधर शादी करते भी नहीं है, करेंगे तो भी बच्चा ही नहीं रहता उनका. अभी जापान का तो 1 minute फिर भी 3 सेकंड से तो हम लोग अभी थोड़ा आगे आया है. 3 सेकंड में एक चाइल्ड बॉर्न होगा तो 1 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट्स में कितना होगा, 24 आवर्स में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज में कितना होगा. अभी स्लोली ये एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ा है. नाउ दैट एज फॉर गेटिंग मैरिज is little bit delayed. Village areas में अभी भी वही चलता है. So we are saying कि this population growth is a which phenomena? Is it constant? Changing. That is dynamic. The numbers, distribution and composition are underlined. This is what is the word you have to remember. Constantly changing. This is the influence underlined. Interaction of 3 processes. अभी इसका मैं meaning दूंगा. Birth, death and migration. Do you think population ये तीनों की वजह से प्लस माइनस होता है? डेथ से भी होता है. That is correct. How about migration? There are 2 types of migration in geography. One is interstate, another is intrastate. What is interstate? When Maharashtrians are moving into Gujarat. Intrastate within Maharashtra. Abhi now we are forget about intra and inter. Now we are saying intra-nation and intra-nation. I personally have tried to settle myself and my family in Toronto, Canada. I've got a PR. फिर उधर जाने के बाद मुझे लगा ये क्यों मरने -7 was the temperature. फिर भी मैं लकी था, मेरा कुछ दूर का फ्रेंड्स लोग था उधर, लोग बोला अलग how is the temperature, मतलब -7. I am trembling. That's okay man, good. मतलब क्यों रे? I am living in -40. मतलब मार उधर. फिर मुझे याद आता था, वाह क्या बॉम्बे और क्या वड़ा पाव. अभी उधर का सिटीजन्स के लिए वो ओके है. फॉर यू एंड मी मुंबई का -7 इज द हाईएस्ट डे टेम्परेचर आई रिमेंबर वाज 21 डिग्री. अभी 21 इन मुंबई वी विल शिवर.
एंड वो मेरा जो लैंडलॉर्ड जिसे मैंने घर लिया था, you will be switching on AC. मैंने बोला यार बंद करना यार, 21 is, you don't worry, this is very hot. 21 is very hot. You see the winter. 3 दिन का विंटर में पहला दिन का टेम्परेचर 10 डिग्री गिरा, सेकेंड दिन आके 0 डिग्री गिरा, थर्ड आके -2, उसके बाद 0 क्या प्लस में भी माइनस में ही था नेक्स्ट 6 मंथ्स। मैंने बोला इसीलिए वो कैनेडियन बार बार मुझे डरा रहा था, सी द विंटर सी द विंटर। फिर जब मेरे से कभी कभी मिलता था लॉन वगैरह में, हाउ इज द विंटर, मैं बोला गुड गुड वेरी गुड, इधर तो अपने बजे हुए हैं, आर यू एंजॉयिंग, मैं बोला हाँ गुड गुड। अब क्या करें, क्या कर सकते, हर जगह पर जाएगा सब कुछ उल्टा, ऐसे किलोमीटर्स माइल्स, कार में जाएगा तो डोंट फिल अप पेट्रोल और डीजल, यू हैव टू फिल गैस। यार ये कौन सा कंट्री में, and during day, winter time they will keep the clock 2 hours before. During summer time I remember sunlight used to there 9:45 तक sunlight रहता था summer time में, 9:45 नाइट का, 10 बजे सनसेट होता था। ये तो हंसी आता था, ये कंट्री की किधर, पोलर का नजदीक है ना, और विंटर में एग्जैक्ट ऑपोजिट, आफ्टर 12 only glimpse of light, we cannot see sunlight directly, सन तो आफ्टरनून 12 में थोड़ा सा ऐसा लाइट्स का रे आएगा, 3 बजे के बाद जो डार्क होएगा ऐसा लगेगा, आफ्टरनून 3 के बाद ऐसा लगेगा रात का 11 बजे, फुल्ली डार्क एंड हेवी स्नोफॉल। ऐसे लवली कंट्री। तो मेरा फ्रेंड्स लोग, हाउ आर यू एंजॉयिंग, बोला हाँ तू भी आए तो मर एंजॉयिंग, बट क्या करें ना, वी हैव सेलेक्टेड, आई वर्क देयर, अर्न देयर, गुड लाइफ। मैंने बोला ठीक है अभी नहीं जाने, तू कनाडा छोड़ के आ गया, बोला क्यों तू जा रहा है, हाउ डिड यू कम, मैं बोला फ्लाइट पकड़ के आया। Then I went to a country, from there only I got the appointment in Singapore. There I stayed more years, 4.5 years उधर रहा, because that is close to India. But उधर exactly opposite. Every day rainfall, temperatures are always 38 and 39. मैं बोला उधर था ऐसा, इधर था ऐसा, उधर 6 layers of dress पहनो, इधर 1 layer में पसीना पूरा छूट जाता था सिंगापुर। फिर भी मेरा पीपल कुछ लोग फिर दुबई गया, जिस मैं कॉलेज के लिए था, उन्होंने बोला सर नेक्स्ट ईयर आपको दुबई जाने का, बोला बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा दुबई। दुबई में तो पब्लिक कैन नॉट लिव, जैसे 43 डे टाइम टेम्परेचर, बट पीपल दुबई दुबई, बोला जाओ मारो बट समर भी उनका कितना महीने का रहता, सुनेगा तो हंसेगा, 9.5 महीने का समर है उनका। हमारे तरह कुछ 3-4 महीने नहीं। फिर बोलते दुबई में बुर्ज खलीफा, तू कुछ भी बना है तो राजस्थानी है ना तू, और सर बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, मैं क्या सिटी खरीदने जा रहा हूँ, मुझे भी कोने में रहना है। सर हाउ डिड यू रिजेक्ट दुबई, मैं बोला आई सेड नो, दैट इज द रिजेक्ट। देयर आर सम इंडियंस हु हैव स्पिटेड आउट ब्लड व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, बिकॉज़ हमारा बॉडी वैसा प्रोन नहीं है। 43 डिग्री एटलीस्ट एन एवरेज मुंबई कैन नॉट विथस्टैंड, बट हर जगह एसी है, दैट इज फॉर श्योर। बट हर जगह क्या, रोड में भी तो चलेगा, रोड में सॉरी कोई कुत्ता भी नहीं चलता उस टाइम, सब लोग कार के अंदर। हाँ इवनिंग में 7 बजे के बाद, तब थोड़ा टेम्परेचर मैंने सुना कम रहता है। मतलब कितना कम रहता है, बोले 34-36 रहता है। हाँ मतलब दिन में 43 रहता है, शाम को 34-33 में जाता है। बोले यार दिस इज अमेजिंग। सो आई एम गिविंग ऑल दिस डिटेल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डेंसिटी। अब इंडिया में कभी ऐसे सुना है आपने, हाँ रेयर प्लेसेस है 1-2 जगह पर, but is it India overall good? That's why Europeans come to India, they enjoy, oh lovely, हाँ बराबर lovely, because our climate they said it is one of the better if not best. Okay चलिए let's move ahead. Growth of population में population growth का मैं definition दूँ क्या? No need, you open bracket from here. Population growth of population refers to, open brackets, change in the number of inhabitants in a country or territory during, एक काम करो ये नोटबुक में लिख लो, with that will wind up. Population growth ये आपको याद भी नहीं रहेगा। refers to change in the number of total citizens
of a given country during specific period of time. Bracket में डाल देना 10 years. One more sentence. Such population growth is absolutely important to understand. Such population growth is absolutely important to understand the growth and development of any country. Thank you. I'll see you in the next lectures. Okay? And good night.